Good morning. How are you all? I hope you all are good and happy. Now we are going to learn active passive part 2. We have learned part first node in which we have learned about how to change active to passive. And now we are learning part 2. I am writing a sentence active passive voice. I have wrote a sentence. I gave him a book. Two objects are here, him or a book. Him is indirect object and a book is direct object. I am choosing him as a subject. Him, he, was यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है जो कि पास्ट इंडेफिनिट है. हम इसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे तो ही के साथ यूज़ करेंगे वॉज. गिवन अ बुक बाय मी. आई मी में कैसे चेंज हुआ ये सब मैं पार्ट फर्स्ट में बता चुकी हूँ. अब मैं यहाँ पे अ बुक को एज ए सब्जेक्ट यूज़ करूँगी. अ बुक was given to him by me. जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एम वी के बीच में टू ऐड करके जोड़ देते हैं. टू या फोर हम प्रीपोजिशन का यूज़ करके यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा लिविंग बीइंग होते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं. अब हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस. इम्परेटिव सेंटेंस, there are three types of imperative sentence. First, order. Second, request. Third, एडवाइस. ऑर्डर जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऑर्डर या कमांड दिया जाता है इसमें. तो पहले हम जानेंगे ऑर्डर सेंटेंस. ऑर्डर सेंटेंस में ऑर्डर दिया जाता है. लाइक एग्जांपल, गो आउट. गो आउट में किसी को बाहर जाने के लिए कह रहा है, किसी को आदेश दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है. तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा You are ordered to plus verb first plus remaining sentence. You are ordered to go out. Imperative sentence हमेशा मैन वर्ब से शुरू होते हैं. मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसा कि गो, यहाँ पे गो है. जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तब यू आर ऑर्डर्ड टू गो आउट. निगेटिव सेंटेंस इसका होता है फॉर्मूला यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस रिमेनिंग सेंटेंस. या तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर यू आर फॉरवर्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस रिमेनिंग सेंटेंस. या फिर यू आर स्टॉप्ड फ्रॉम प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. हमने इसको फर्स्ट वाले में चेंज कर लिया, दूसरे वाले में चेंज करेंगे तो होगा यू आर, जिससे नेगेटिव सेंटेंस का हमने बना दिया डोंट गो आउट. डोंट गो आउट. डोंट गो आउट. इसका बनेगा out. You are ordered to not to sorry.
not to go out। या तो हम इस वे में लिख सकते हैं या फिर you are forbade to go out, या फिर हम you are stopped from going out। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखें। रिक्वेस्ट सेंटेंस। रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट किया जाता है, प्रार्थना की जाती है, जैसे प्लीज गो स्लो, प्लीज गो स्लो। इसको हम चेंज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो स्लो। इसका फॉर्मूला जो है वो बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड रिमेनिंग सेंटेंस। इसका निगेटिव में बनाएंगे, प्लीज डोंट गो स्लो। तो ये बनेगा। इसके फॉर्मूलाज होंगे, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू गो स्लो, और है यू आर forbade to go slow, और है यू आर stopped from going slow। Enough। एडवाइस सेंटेंस थर्ड। एडवाइस में सलाह दी जाती है, जैसे डोंट टेल अ लाई, डोंट टेल अ लाई। उसको सलाह दी जा रही है झूठ नहीं बोलना किसी को, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टेल अ लाई। अगर हम इसको पॉजिटिव में बनाएंगे, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर को हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर। हम इसको भी बना सकते हैं, जैसे यू आर फॉरबैड न लाई, या फिर यू आर स्टॉप टेलिंग अ लाई। एक होते हैं सेंटेंस जो वुड, विल और कुड से शुरू होते हैं, ये भी रिक्वेस्ट वाले होते हैं, जैसे वुड यू हेल्प मी, ये बनेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। I hope you like this video. Like, subscribe and share this video. And thank you for watching and giving your precious time